पॉलन ग्रेन्स को ही माइक्रोस्पोर कहते हैं. ओके, व्हाट इज माइक्रोस्पोर? पॉलन ग्रेन ओनली कंसिडर्ड एज अ microspore. Now what is microsporogenesis? Formation of microspore. Synthesis of microspore considered as a microsporogenesis. So the process of formation and differentiation of pollen grain from microspore mother cells, MMC, by reductional division is called microsporogenesis. तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में आपको दो टर्म याद रखने हैं. सबसे पहले क्या याद रखना है? MMC. What is MMC? Microspore mother cell. Obviously, a baby develops from mother only, na? If I am giving birth to a baby, then I'll become the mother one, and my child become my baby. So just imagine I am microspore mother cell. Okay, and from myself I'll give birth to microspore. मेरे से microspores निकल रहे हैं. ठीक है, तो the process of formation of microspore from microspore mother cell called as microsporogenesis. अब इसको ज्यादा इमेजिन मत करिएगा, बस इतना ही इमेजिन कर लीजिए कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन इज कंसीडर्ड एज अ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. The cells of sporogenous tissue undergo meiotic division to form microspore tetrad. What is microspore tetrad, guys? Okay. अभी देखो ये रिडक्शनल डिवीजन क्या है. आपने सेल डिवीजन पढ़ा है. सेल डिवीजन में माइटोसिस एंड मेयोसिस पढ़ा होगा. माइटोसिस, you will get a similar type of cell. One cell give you similar type of cells, right? एक सेल डिवाइड होती है दो सेल में, you will get a similar. But in meiosis, you will get a division, chromosome number divided. So this is only the reductional division. Now the cell of sporogenous tissue. What is sporogenous tissue? जो अभी हमने लास्ट वाली पिछली वाली स्लाइड में बनाई थी ना, होमोजीनियस सेल्स, वही तो टिश्यू है ना. तो जो होमोजीनियस सेल्स हैं which form sporogenous tissue, the cells of sporogenous tissue undergo meiotic division. Meiotic का मतलब meiosis. They undergo meiosis. Meiosis takes place in two stages, meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis 1 gives two cells, meiosis 2 also form two cells. So they undergo meiotic division to form microspore tetrad. चार बन रहे हैं ना, तो टेट्राड. तो एक MMC से हाउ मेनी माइक्रोस्पोर फॉर्म्ड? 4 माइक्रोस्पोर, एंड दे ओनली नोन एज टेट्राड. चार बन रहे हैं इसलिए हम उनको कहते हैं कि टेट्राड बन गया. ठीक है, ऑल राइट. एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट एंड डेवलप्ड इनटू पॉलन ग्रेन. अब देखो क्या हुआ कि these are the outer layer, epidermis, endothelium, middle layer provide protection, tapetum provide nutrition. Here inside you have a sporogenous tissue which is made up of cells known as microspore mother cells. These microspore mother cells produces microspores, 4 micro, 1 MMC produces 4 microspores. And now what happened when the anther get mature? They dehydrate. Dehydrate का मतलब क्या हुआ? जैसे ये mature हुए ना, इनका अंदर जितना पानी था वो सब ड्राई हो गया. एंड एज द वाटर ड्राई, एज दे डिहाइड्रेट, व्हाट हैपन? द वॉल रप्चर. ठीक है, वॉल टूटी एंड ऑल द माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन्स जो थे, ठीक है, डिहाइड्रेट, द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट एंड डेवलप्ड इनटू पॉलन ग्रेन. तो माइक्रोस्पोर डिसोसिएट हो गए, पॉलन ग्रेन्स बाहर निकल गए. ठीक है. इन आवर बॉडी, लाइक अगर मेल है तो स्पर्म को कहेंगे मेल गैमेटोफाइट. सिमिलरली in case of plants, we have a pollen grain considered as a male gametophyte. Pollen grains are made up of two layered wall. अब जो pollen grain होता है ना, दो wall से बना होता है. देखो pollen grain सबसे पहले तो हमारा spherical होता है, ठीक है, और ये 2 wall से बना होता है. इसके बाहर आपको एक wall मिलेगी, ठीक है. This is a wall. This outer wall is called as exine. ठीक है,
ये जो बाहर वाली वॉल है इसको एक्साइन कहते हैं, और ये जो अंदर वाली वॉल है, दिस इनर वॉल इज कॉल्ड एज इंटाइन। ठीक है, आउटर वाले को एक्साइन, इन अंदर वाले को इंटाइन कहते हैं, राइट। एंड एक्साइन मेड अप ऑफ स्पोरोलेनिन। अब ये जो आउटर वॉल एक्साइन है ये किस चीज का बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ sporolenin. All right, so this exine is made up of what? Sporolenin. Now ये जो sporolenin है ये क्या होते हैं? These are the chemical compound, okay, which provide resistance. So it is a resistance organic compound, right, which provide tolerance to this pollen grain from high temperature, strong acids and alkali. No enzymes can also degrade this sporolenin. That's why pollen grain, because of this sporolenin, pollen grain can be preserved as a fossils. ठीक है, अभी ये जो स्पोरोलेनिन उनको चारों तरफ से कवर करके रखे हुए हैं ना, उसी की वजह से हमारा पॉलन ग्रेन को कोई एंजाइम खत्म नहीं कर सकता, राइट। द पॉलन ग्रेन कैन टॉलरेट द हाई टेम्परेचर, can tolerate the acidic and the alkaline medium, and that's why the pollen grain can be preserved for longer year and it can be used as a fossils as well. All right, the inner wall of the pollen grain called as intine. Inner wall of pollen grains are thin and continuous layer. Okay, so inner wall is what? Inner wall is thinner, outer is your thicker. ये जो outer वाला है ना ये आपका thick होता है, sporolenin. Okay, and inner one is thin, made up of cellulose and pectin. So here this inner wall intine is made up of cellulose and pectin. So this is the structure of your pollen grain. All right, now within the pollen grain you have germ pore, aperture on exine where sporolenin is absent, forms pollen tube. So now अब suppose करिए ये आपका pollen grain है, ठीक है, having two layer, outer and the inner. Now suppose यहाँ पे ना pollen grain में एक pore होता है, right, where no sporolenin is present. ठीक है, ये वो एरिया है जहां पे स्पोरोलेनिन एब्सेंट है. Sporolenin absent here, okay, and this place is known as germ pore, which ultimately develops into pollen tube. So now this only develops in pollen tube. यही जाके बाद में pollen tube बना देगा. ठीक है, so aperture on exine where sporolenin is absent called as germ pore, and from here, so ये क्या है? This structure is what? Germ pore. And the plasma membrane which surround the cytoplasm of pollen grain. So this is all the structure of pollen grain consist of. All right. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।